हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। है जो साई हमारा लिटरेरी टर्म्स टॉपिक जो है वो चल रहा है अभी भी, उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अपने लिटरेरी टर्म्स के टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें मेरी वीडियो को, और मेरी वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए अपना लिटरेरी टर्म्स स्टार्ट करते हैं। The dark lady appears in the sonnets of डार्क लेडी, और किसके सोनेट्स में अपीयर हुई है? ऑप्शन ए टूरे, ऑप्शन बी वॉट, ऑप्शन सी शेक्सपियर, ऑप्शन डी स्पेंसर। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्पेंसर। हु कॉइन्ड द वर्ड एशिया? ऑप्शन ए मॉन्टेगन, ऑप्शन बी लैम, ऑप्शन सी बेकन, ऑप्शन डी ट्राइडेंट। राइट आंसर है ऑप्शन डी मॉन्टेगन। पोइट्री इज म्यूजिकल थॉट, हु सेड? ये किसने कहा है? ऑप्शन ए कार्लिली, ऑप्शन बी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी शेली, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। का राइट आंसर है ऑप्शन ए कार्लिली। एक्ट क्या है? ऑप्शन ए मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले, ऑप्शन बी एन एक्टिंग कैटेगरी इन अ प्ले, ऑप्शन सी चैप्टर ऑफ अ प्ले, ऑप्शन डी एक्टिंग बाय एक्टर्स। द राइट आंसर है ऑप्शन ए अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले। Zounds is an euphemism for, option A Zeri sound, option B ghost turn, option C God's love, option D God's wound। का राइट आंसर है ऑप्शन डी God's wound। The Pulitzer Prize is awarded by, Pulitzer Prize है ऑप्शन ए द अमेरिकन गवर्नमेंट, ऑप्शन बी द काउंसिल ऑफ अमेरिकन आर्ट्स एंड लेटर्स, ऑप्शन सी द वर्ड्स द फोर्ड फाउंडेशन, ऑप्शन डी कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। Myth comes from Greek mythos signifying, ग्रीक वर्ड माइथोस से आया है मिथ वर्ड। इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए इमेजिनेशन, ऑप्शन बी चिल्ड्रन स्टोरीज, ऑप्शन सी स्टोरी और प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड, ऑप्शन डी कैरेक्टर्स फ्रॉम द पास्ट। का राइट आंसर है ऑप्शन सी स्टोरी और प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड, ट्रू और इन्वेंटेड। Agate prop theatre, a well known from in 20th century is एगेट प्रॉप थिएटर को 20th सेंचुरी में जाना जाता है की वजह से। ऑप्शन ए अ फॉर्म ऑफ फोक थिएटर इन रूरल इंग्लैंड, ऑप्शन बी ब्रेसिन ड्रामा, ऑप्शन सी मार्क्सिस्ट एंड और कम्युनिस्ट प्रोपोगंडा using the theatre form, option D a civil rights movement on the streets of Chicago, United States। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मार्क्सिस्ट एंड और कम्युनिस्ट प्रोपोगंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म। It is a genre of fiction which is characterized by mystery and supernatural horror. It is often set in dark castle or other medieval setting. It is
ऑप्शन ए गॉथिक फिक्शन, ऑप्शन बी रोमांटिक फिक्शन, ऑप्शन सी रीजनलिज्म, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गॉथिक फिक्शन। Whose novel is The Castle of Trento, a Gothic story? Option A Henry Fielding, option B Horace Walpole, option C Jane Austen, option D none of these। राइट आंसर है ऑप्शन बी होरेस वॉल्पोल। हु रोड फ्रैंकस्टाइन, फ्रैंकस्टाइन किसने लिखी है? ऑप्शन ए पीवी शैली, ऑप्शन बी कीट्स, ऑप्शन सी बैरन, ऑप्शन डी मैरी शैली। का राइट आंसर है ऑप्शन डी मैरी शैली। The word epistolary has been taken from the Latin word epistola. It means एपिस्टोली वर्ड जो है लैटिन वर्ड के एपिस्टोला वर्ड से लिया गया है। इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए अ पेपर, ऑप्शन बी अ चेक, ऑप्शन सी अ लेटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। का राइट आंसर है ऑप्शन सी अ लेटर। It is a it is a fictional society which is quite opposite to utopia. It is option A Arcadia, option B dystopia, option C Commonwealth, option D none of these। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डिस्टोपिया। Brave New World by Huxley is an instance of हक्सले की ब्रेव न्यू वर्ल्ड में क्या है? ऑप्शन ए कैंपस फिक्शन, ऑप्शन बी डिस्टोपिया फिक्शन, ऑप्शन सी मिस्ट्री फिक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डिस्टोपियन फिक्शन। एन अकेडमिक फिक्शन इज नन एज, अकेडमिक फिक्शन को जाना जाता है ऑप्शन ए साइंस फिक्शन, ऑप्शन बी रेडिरेक्शन, ऑप्शन सी चिकलेट, ऑप्शन डी कैंपस फिक्शन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कैंपस फिक्शन। चेतन भगत 5 पॉइंट समवन इज एन इंस्टेंस ऑफ चेतन भगत की 5 पॉइंट समवन क्या है? ऑप्शन ए कैंपस फिक्शन, ऑप्शन बी स्पेस फिक्शन, ऑप्शन सी इंजीनियरिंग फिक्शन, ऑप्शन डी साइंस फिक्शन। का राइट आंसर है ऑप्शन ए कैंपस फिक्शन। डोरिस लेसिंग शिकस्ता इज एन इंस्टेंस ऑफ डोरिस लेसिंग की शिकस्ता में क्या है? ऑप्शन ए कैंपस फिक्शन, ऑप्शन बी डिटेक्टिव फिक्शन, ऑप्शन सी स्पेस फिक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। का राइट आंसर है ऑप्शन सी स्पेस फिक्शन। It is a kind of fiction which deals often playfully and self-referentially with the writing of fiction or its convention. It is option A space fiction, option B campus fiction, option C meta fiction, option D none of these। का राइट आंसर है ऑप्शन सी मेटा फिक्शन। Who defines metafiction as fictional writing which self-consciously and systematically draws attention to its status as an artifact in order to pose questions about the relationship between fiction and reality। ऑप्शन ए किसने डिफाइन किया है इस मेटाफिक्शन को? ऑप्शन पैट्रिका वॉक, ऑप्शन बी फील्डिंग, ऑप्शन सी रैंसम, ऑप्शन डी जेम्स जॉयस। का राइट आंसर है ऑप्शन ए पैट्रिका वॉक।
It is a genre of fiction which con- concentrates on young working women and their emotional lives. It is क्या ये ऑप्शन ए मेटा फिक्शन, ऑप्शन बी कैंपस फिक्शन, ऑप्शन सी चिकलेट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द राइट आंसर है ऑप्शन सी चिकलेट। Candace Bushnell's Sex and the City is an instance of Candace Bushnell's Sex and the City में क्या है? ऑप्शन ए चिकलेट, ऑप्शन बी मेटा फिक्शन, ऑप्शन सी कैंपस फिक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। का राइट आंसर है ऑप्शन ए चिकलेट। पॉपुलर फिक्शन, वर्नाकुलर fiction, category fiction, paperback fiction, etc. are the other names by which it is known. It is इनको इन नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? ऑप्शन ए जंक फिक्शन, ऑप्शन बी मेटा फिक्शन, ऑप्शन सी कैंपस फिक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। का राइट आंसर है ऑप्शन ए जंक फिक्शन। Which type of fiction includes genres like horror, detective, crime, science, romance, western, action, adventure, mystery, etc. ये किस टाइप के जॉनरा में है? ऑप्शन ए जंक फिक्शन, ऑप्शन बी मेटा फिक्शन, ऑप्शन सी कैंपस फिक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। का राइट आंसर है ऑप्शन ए जंक फिक्शन। It is often published in paperback edition with cheap price. It has all the entertaining stuff. Plot is interesting as it keeps the interest of the reader till the end. It mirrors the contemporary life. No serious issue is touched. It is क्या ये? ऑप्शन ए जंक फिक्शन, ऑप्शन बी मेटा फिक्शन, ऑप्शन सी कैंपस फिक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। का राइट आंसर है ऑप्शन ए जंक फिक्शन। The Da Vinci Code is an instance of junk fiction. It is written by the Da Vinci Code जंक फिक्शन है। ये किसने लिखी है? ऑप्शन ए अयान रैंड, ऑप्शन बी जेम्स पैटरसन, ऑप्शन सी डैन ब्रांट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। का राइट आंसर है ऑप्शन सी डैन ब्रांट। It is a nihilistic art movement. It flourished in Europe early in the 20th century. It is based on irrationality and negation of the laws of beauty. It is क्या ये? ऑप्शन ए डेडिज्म, ऑप्शन बी सिंबलिज्म, ऑप्शन सी फ्यूचरिज्म, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। का राइट आंसर है ऑप्शन ए डेडिज्म। It is an artistic movement in the late 19th century. It attempts to express abstract or mystical ideas through the symbolic use of images. It is option A Dadaism, option B Expressionism, option C Symbolism, option D Impressionism। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिंबलिज्म। It is a revolt against realism and naturalism. It attempts to achieve a psychological or spiritual reality rather than record external events in logical sequence. It presents the world from subject perspective. Artistic
trick to express meaning or emotional experience there rather than physically reality. Option A Impressionism, option B Expressionism, option C Dadaism, option D Theater of the absurd. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक्सप्रेशनिज्म. It is a movement by American and English poets. It began in early 20th century in reaction to Victorian sentimentality. It used common speech in free verse with clear concrete imagery. Option A symbolism, option B cubism, option C images, option D imagery. The right answer है option C images. It is a group of authors who repudiated respectability and normal social behavior. They cultivated a ruthless manner of living. They rejected standard narrative values and sought sexual liberation and exploration. They became drug addicts and were devoted to drugs. This group belongs to, ये ग्रुप किससे बिलोंग करता है? ऑप्शन ए यंग जनरेशन, ऑप्शन बी बीट जनरेशन, ऑप्शन सी थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. द राइट आंसर है ऑप्शन बी बीट जनरेशन. Allen Ginsberg's Howell, William S. Burroughs' Naked Lunch and Jack Kor's On the Road are the instances of. में क्या है? ऑप्शन ए थिक लिटरेचर, ऑप्शन बी हेडोनिस्टिक लिटरेचर, ऑप्शन सी बीट लिटरेचर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बीट लिटरेचर. It is 20th century philosophical movement chiefly in Europe. It assumes that people are free. They are responsible for what they make of themselves. The term is option A, the theater of the absurd, option B, Marxism, option C, existentialism, ऑप्शन डी फ्यूचरिज्म. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एक्सिस्टेंटलिज्म. This movement was founded by Filippo Tommaso Marinetti in Italy. It favored violent departure from tradition. It aimed at giving an expression to dynamic energy and movement of mechanical process. Option A existentialism, option B expressionism, option C futurism, option D cubism. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्यूचरिज्म. It is a school of 19th century French painters. These painters represent objects as they appear to the artist in a particular moment and mood. They represent objects from a particular vantage point instead of duplicating exactly their physical properties. It is क्या है? ऑप्शन ए इम्प्रेशनिज्म, ऑप्शन बी एक्सप्रेशनिज्म, ऑप्शन सी surrealism, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इम्प्रेशनिज्म. This movement developed in France under the leadership of Henri Breton. In 1924, it developed out
of daddies, the followers used fantastic images and encourage Congress juxtaposition in order to represent unconscious thought and dreams. It is option A futurism, option B magic realism, option C surrealism, option D naturalism. का राइट आंसर है ऑप्शन सी surrealism. ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इज ऑल्सो नन एज ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को और किससे जानते हैं? ऑप्शन ए ट्रैक्टेरियन मूवमेंट, ऑप्शन बी रिफॉर्मेशन, ऑप्शन सी रेनेसेंस, ऑप्शन डी हार्वर्ड मूवमेंट. का राइट आंसर है ऑप्शन ए ट्रैक्टेरियन मूवमेंट. जॉन केवल वार्ड एंड पोएसी बिलोंग टू जॉन केवल वार्ड एंड पोएसी किससे बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए फ्यूचरिज्म, ऑप्शन बी एग्जिस्टेंटलिज्म, ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. का राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड मूवमेंट. द टर्म दैट इज यूज्ड टू सेट for the scene or an atmosphere by a series of brief pictures of impression following one another quickly without apparent logical order is option A montage, option B pasting, option C shining beauty, option D naturalism. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए montage. The doctrine which regards pleasure as the chief good is option A realism, option B puritanism, option C hedonism, option D none of these. का राइट आंसर है ऑप्शन सी hedonism. The term for a Japanese poem of 3 lines with 17 syllables 575 is Japanese poem में थ्री लाइन में 17 सिलेबल होते हैं 575. वो कौन सी है? ऑप्शन ए एको, ऑप्शन बी टैंका, ऑप्शन सी लिरिक, ऑप्शन डी लिमरिक. का राइट आंसर है ऑप्शन ए एको. एको the major character who stands directly opposed to the protagonist is option A antagonist, option B villain, option C side hero, option D none of these. का राइट आंसर है ऑप्शन ए एंटागोनिस्ट. थैंक यू गाइस मेरी वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए. अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल को फॉलो करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें.